It basically starts from the basal layer and the atypical cells जो कि basal layer में होते हैं या disorganized cells जो होते हैं, they start moving upwards. ठीक है? This is a picture of mild dysplasia. यहाँ पे देखें तो जो एटिपिकल सेल्स हैं या जो राउंडेड सेल्स हैं वो 2/3 एटलीस्ट 2/3 जो है वो इन्वॉल्व करना शुरू कर चुके हैं समवेयर इन द मिडल ऑफ द फुल थिकनेस. एंड यहाँ पे देखें तो फुल थिकनेस द सेल्स आर राउंडेड एंड दे आर atypical. If you compare a normal esophageal mucosa which is here to this one, you can see कि इसमें cells अगली लग रहे हैं, they're larger in size. जिस तरह esophagus में flattened cells one on top of another होते हैं, ये उस तरह से नहीं है. They become more or less rounded in shape. So whenever there is a full thickness involvement of these atypical cells, उसको हम कहते हैं dysplasia. Now, when we talk about organisms that are or infections that can be present in esophagus, first and foremost is Candida. Candida में क्या होता है? Usually surface exudate में आपको organisms मिलते हैं. You can see in this slide. This is a squamous mucosa. ठीक है? बहुत अच्छा इसमें highlight नहीं हो रहा, but this is a squamous mucosa. On top you can see these structures. ठीक है? They are very long. They are branching, as you can appreciate over here. Branching भी है. और छोटे छोटे डॉट्स भी हैं. सो दीज आर कैंडिडा. एसोफेगस में इस तरह के ऑर्गेनिजम्स आएंगे तो यू थिंक ऑफ कैंडिडा. ऑफ कोर्स एसोफेगस में एचपी तो होते नहीं है, तो कैंडिडा इज द मोस्ट कॉमन थॉट. नेक्स्ट इज अनदर पिक्चर ऑफ कैंडिडा. ओवर हियर यू कैन सी दीज आर द सूडोहाइफी जो ब्रांचिंग आपको नजर आ रहे हैं. ठीक है? एंड दीज आर द स्पोर्स over here. You see, these are the spores. This is a PASD stain, that is periodic acid shift diastase resistant. This highlights the fungal organisms. इसका function होता है to highlight the fungal organisms. Next slide is this. हम जहाँ infections की बात कर रहे हैं, हमने पहले बात की candidiasis की. Second infection that we'll think of is HSV, that is herpes simplex. herpes simplex में क्या होता है कि जो आपके स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स हैं, जैसे ये एपिथेलियल सेल्स आपको नजर आ रहे हैं, एपिथेलियल सेल्स के न्यूक्लियाई में इंक्लूजन्स बनना शुरू हो जाती हैं. ठीक है? फॉर HSV द टिपिकल इंक्लूजन्स दैट यू सी आर कंप्राइज ऑफ मल्टी न्यूक्लिएशन. दैट मीन्स नॉर्मली सेल में एक न्यूक्लियस होता है, इसमें न्यूक्लियाई मल्टीप्लाई हो जाते हैं, देयर इज मल्टी न्यूक्लिएशन.